गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आई होप कि आप लोग सब लोगों ने अपना रिवीजन प्रॉपर किया होगा, दैट वी कैन स्टार्ट द रिवीजन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ unit number 3 as we discussed in the last class. So let's start for the revision. Right, we have discussed minor. Section 3 of Indian Majority Act provides a minor is a person who is under the age of 18. Under the age of 18. Rules regarding the contract with minor are: an agreement is void ab initio with minor. Agreement cannot be ratified by the minor even after attaining the majority. Minor cannot be asked to compensate or pay for any benefit under a void agreement. He can misrepresent his minority. He cannot enter into partnership. He cannot be adjusted insolvent. Uh, Parents and guardian of minor are not liable for the contract entered by the minor. Minor can be agent but without incurring any personal liability. In case of joint contract with minor and adult, only adult will be liable. An adult can be the surety or guarantor for minor. A minor may, acting through his lawful guardian, become a shareholder, but company cannot directly allot the share to the minor. Minor is liable for tort. Minor is also personally liable for the contract for the benefit or supply of necessaries entered by guardian within the scope of them authority, but up to the estate of the minor. Person of unsound mind, idiot, the person who is unsound all the times. Lunatic, usually unsound, but sometimes is sound, can enter into the contract when he is of sound mind. Intoxicant, usually sound mind, but can enter into the contract when he is of cannot enter into the contract when he is of unsound mind. Burden of proof, in case of lunatic, the proving of sound mind at the time of contract lies on the person who affirms it. It means the contract with the lunatic is presumed is void. The person who says the contract is valid, it means the contract was entered at a time when the person is of sound mind, so he has to prove. Intoxicant, in case of intoxicant, normally the person is sound mind, so contract with the intoxicant is presumed as the valid contract. So the person who says the contract is invalid, it means the contract was entered at a time when the person is of unsound mind, so he has to prove. Disqualified by law and alien enemy, foreign rulers, corporation, insolvent, convicts, ये हम डिस्कस कर चुके बच्चों आपसे. प्लीज प्रिपेयर द शीट. टेक्निकल में सुन पा रहे हैं क्या मुझे एक बार? टेक्निकल में कोई है? मुझे कोई चैट बॉक्स में चैट नहीं आ रही है. मुझे कोई अच्छी क्वेरी नहीं दिख पा रहा हूँ मैं. टेक्निकल सुन पा रहे हैं क्या मुझे? उज्जवल बेटा अभी रुक जाइए. 1 मिनट, 1 मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ. जब तक आप शीट प्रिपेयर कीजिए.
बच्चों अभी मेरी बात हो गई है, वो कांटेक्ट कर रहे हैं, जब तक आप इसको कंप्लीट कीजिए। अभी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है आपके सामने। देन वी विल चैट बॉक्स में जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी सॉल्व हो जाएगी। हो गया मेरे ख्याल से, ओके हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, चैट बॉक्स अब वर्किंग है। फर्स्ट क्वेश्चन, द रिक्वायरमेंट that parties to an agreement must be competent to contract is laid in section 10, 11, 24, 25. अभी चैट रेडी हो गया? The answer is section 11. Next question, which of the following person do not fall in the category of persons of unsound mind? The answer is alien, because idiot, lunatic, and drunken person are covered in the category of persons of unsound mind. As a general rule, an agreement with or by minor is void ab initio, voidable, valid, unlawful. The answer is void ab initio. In case where a minor enters into an agreement for the purchase of necessary, the minor is personally liable to pay, minor's estate is liable to pay, minor's guardian liable to pay, none of these, as minor's agreement is void. The answer is minor's estate is liable to pay. अनम्यूट बेटा लास्ट में करेंगे अत्यंत, लास्ट में मैं अलाउ करूंगा, अभी आप इसको कंटिन्यू करिए प्लीज। इफ यू हैव एनी क्वेरी काइंडली सेंड ऑन द चैट बॉक्स। Persons of unsound mind are competent to contract, not competent to contract, discouraged by the law not to enter into the contract, required to enter into contract with the permission of the court. The answer is not competent to contract. A lunatic can enter into a valid contract at any time only with the court permission if the other party has no objection, only during lucid interval. Lucid interval means at the time when he is not lunatic. The answer is only during lucid interval. A minor can be appointed as an agent, cannot be appointed as an agent, can appoint other as an agent, none of these. The answer is can be appointed as an agent. A convict who is sentenced for imprisonment can not enter into the contract throughout his life, cannot enter into contract during the period of imprisonment, can enter into a valid contract even during the imprisonment, can enter into a contract of marriage.
The answer is cannot enter into contract during the period of imprisonment. A contract is space if it is beneficial to minor, valid, void ab initio, void, voidable. The answer is valid. Which of the following persons are disqualified by law from entering into a valid contract? Alien enemies, insolvent, convicts, all of these. So these were the questions for your practice. Now come to the rest part of unit number 3. In free consent, we have already discussed coercion, that is section 15, undue influence, section 16. Now we are discussing fraud, section 17. So what is fraud? क्वेश्चन नंबर 4, एक डाउट है, एक मिनट रुकिए बेटा, जस्ट वेट. In case where a minor enters into an agreement for the purchase of necessaries, then minor is personally liable to pay or minor's estate is liable to pay. So minor's personally liable means हो गया कि whether the minor has any property or not, he is even still he is liable to pay. But actually law provides that if only assets are there, yeah, assets are with minor, then minor is liable, otherwise he is not liable, right? और क्या है? Ujjwal sir 10 on 10, very good beta. Khalid 10 on 10, good. Trupti 9, very good. Sir, why valid contract is beneficial for minor? If contract, I have discussed beta, if minor has all rights in the contract, I have already discussed with the slide in the previous class that if contract is for the benefit of minor, the minor can claim the benefit, right? Okay. 8th क्वेश्चन में क्या डाउट है? A convict who is sentenced for imprisonment, एक convict जो जेल में है वो बस उस वक्त कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता जब वो जेल में, that is the answer, point number B, cannot enter into the contract during the period of imprisonment. Akshay 10 on 10, good. Tanya 9. चलो let's start section number 17. Ready? So next point is fraud, section number 17. So as per the Indian Contract Act 1872, section 17 provides fraud means and includes any of the following acts. Any of the following act, कोई भी एक act, any of the following acts by the committed by the party of contract or by his agent. It means the person who is committing, party of the even person of the party is committing or he is committing through his agent with intention to deceive or induce a person to enter into the contract. Deceive means धोखा देना, induce means फुसलाना. So with the intention to deceive or induce a person to enter into the contract. What are those acts? First is the suggestion that a fact is true when it is not true, and the person making the suggestion that a suggestion does not believe it to be true. In simple words,
The meaning of this sentence is knowingly making false statement. Knowingly making false statement. जानबूझ के झूठ बोलना. Suggestion that a fact is true. You are saying that fact is true, but actually it is not true. And you does not believe that it is true. यानी आपको पता है कि ये सही नहीं है. So in simple words, we can say knowingly making a false statement. Second point, see the example. A sells his watch to B by saying that the watch is made in Japan, but actually the watch is Indian. And this fact is known to A. A has the knowledge that he is making a false statement. So in that case, it is said that A has made a fraud. Clear? Is it clear? Any doubt on this first point? Okay. Second point, active concealment, knowingly hiding the facts. Active concealments of fact by a person having knowledge or belief of the fact. सिंपल भाषा में क्या बोला हमने? knowingly hiding the facts. First was knowingly making false statement. Second is knowingly hiding the facts. सच को छुपाना ये भी धोखा है. See the example number 14. X sells a horse to Y. Horse is blind and X knows the fact. When Y asks, is horse blind? X clearly says no. Here X made a promise made without any intention of performing it. It means you are making the promise, but you have no intention that you will perform accordingly. You are entering into the contract, but you know that you will not perform the contract. You will not perform the contract. It is called promise made without any intention of performing. Fourth point, any other act fitted to deceive. Any other act fitted to deceive means doing any working, just intention, with intention to deceive the other person. कोई भी काम धोखा देने के उद्देश्य से किया गया हो. See, A agrees to double B's gold by magic and runs away with his gold. It is a fraud. And last point, any such act or omission as law specifically declares as fraudulent. It means the act which is not covered in point number 1, 2, 3, 4. But government or law specifically provide that this statement will be considered, this statement or this act will be considered as fraud. So what we have discussed in section 17, knowingly making false statement, knowingly hiding the facts, a promise made without any intention to perform, any other act fitted to deceive, and last one, any other act which law specifically declared that it is a fraud. क्लियर इतनी बात? वॉइस कम आ रही है क्या बच्चों? नहीं. ओके. एक बच्चे की शायद, बेटा आपकी शायद किसी बच्चे की प्रॉब्लम थी, आपकी शायद ऑडियो में प्रॉब्लम है. one person of you is asking, sir, what is difference between 1 and 2? 1 and 2 में क्या फर्क है? 1 and 2 is making, बोल रहे हो आप, you are making a false statement.
you are making the false statement, and second, you are hiding the truth. Okay. अक्षित क्लियर हुआ क्या बेटा? सर 4 और 5 में क्या डिफरेंस है? 4 is act which is not covered in 1, 2, 3, but done by party with intention of fraud, with intention to deceive. But in point number 5, law specifically mentioned that this act will be fraud, whether intention is fraudulent or not. कि भैया आपकी इच्छा धोखा देने की थी या नहीं थी, लेकिन हम ये बता रहे हैं ये काम करोगे तो फ्रॉड बना जाएगा. क्लियर? नाउ ऑल पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट? Okay. One question arises, but before it, come to the essential elements of fraud. There must be a representation or assertion, and it must be false. Means statement and which must be false. False statement. The question arises whether silence is fraud or not. In normal case, silence is not fraud. But in two cases, silence will be considered as fraud. First, we discuss the normal point. Example number 16. Egg sales by auction, Nilami, to buy a horse which X knows to be unsound. X ने Y को auction से घोड़ा बेचा, और घोड़ा क्या था? Unsound. The horse was unsound. But X says nothing to Y about the horse unsoundness. This is not fraud. This is not fraud as per the law. I come on another example. Practically think सोचते हैं. Let's think practically. Suppose A is the owner of a suppose a manager of Big Bazaar. A is the manager of Big Bazaar, right? All of you listen the name of Big Bazaar. ठीक है. B reaches to the Big Bazaar and ask Mr. A. B reaches to the Big Bazaar and ask Mr. A. Sir, I have to purchase a aluminum या steel pen. I have to purchase a steel pen. Right? I have to purchase a steel pen. A has given the indication, sir, please go to that place and you will find an area in which there are many types of pen, steel, copper, aluminium, everywhere. So B reaches that place, but after that, B's mind is changed. B's mind is changed. He thinks he should not purchase the steel pen, he should purchase the copper pen. So he selects the copper pen. But A was looking B and found that Mr. B has picked the copper pen, a copper pen, while he was asking for steel. But he says nothing. So whether in this case, my question is whether in this case it's a duty of A to indicate B, sir, no, you are selecting a wrong pen. You have told me about steel pen, but you are selecting the copper pen. My question before you. अब मैं हिंदी में बोलता हूँ इस चीज को, हम कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है कि ए मैनेजर है बिग बाजार का, बी एक कस्टमर जाता है बिग बाजार में और ए से पूछता, सर मुझे ना एक बर्तन चाहिए, किसका? स्टील का, एक फ्राइंग पैन चाहिए स्टील.
ए कहता सर उस कोने में चले जाइए, वहां पर स्टील बहुत सारे पेन रखे हुए, बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं, स्टील का भी है, कॉपर का भी है, आपको मिल जाएगा। बी वहां जाता है तो उसे लगता है नहीं यार, मुझे स्टील नहीं, मुझे कॉपर का एक बर्तन खरीदना है, फ्रैंकलिन कॉपर का लेना है, कॉपर सेलेक्ट करता है। अब ए देख रहा था, ए को तो पता नहीं बी के मन में क्या चल रहा है, तो ए ने क्या किया, क्या ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर बी सिलेक्ट करता है कॉपर पेन इन प्लेस ऑफ स्टील? बताइए। एज पर द लॉ, as per the law, A is not responsible. Here, silent by A is not fraud. Silence is fraud only in two cases. Come to those points. Only in two cases where there is a duty to speak, where his silence is speech. Where it's a duty, आपकी ड्यूटी थी सच बोलने की, बताने की, या दूसरा पॉइंट आपका साइलेंस ही स्पीच था। Come to the example number 18 first, then we will come on the example number 17. See the example number 18 where y says to x, if you do not deny it, I shall assume that horse is sound. If you do not deny, I shall assume that horse is sound. X says nothing. Now x silence is equal to speech. Y ने x से कहा कि भैया अगर तुमने मना नहीं करा तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा साउंड है। X ने कुछ नहीं बोला, तो ये क्या हो गया, साइलेंस क्या हो गया, इक्वल टू स्पीच। अब इन दिस केस if horse is sound unsound and X is nothing, then it is fraud. Then it is fraud. Any doubt in example number 18? Any doubt in example number 18? Clear हुआ कि नहीं हुआ? Now come to the example number 17, which says where there is duty to speak and you are silent, then it is a fraud. X sells by auction to Y a horse, which X knows to be unsound. Y is X's daughter, and here the relation between the parties would make it X duty to tell Y if horse is sound. तो लॉ व्हाट्स लॉ सेइंग कि सर एक्स ने ऑक्शन से वाई को एक घोड़ा बेचा जो क्या था, अनसाउंड था, एंड वाई कौन है, वाई इज द डॉटर ऑफ एक्स। तो द रिलेशन बिटवीन दीज टू इज दिस काइंड ऑफ नेचर दैट इट्स अ ड्यूटी of Mr. X to reveal the truth, to show the facts of the fact that horse is unsound. So only these two cases where silence is equal to speech and their duty to speech. Only in these two cases, silence will amount to fraud in the Indian Contract Act. Otherwise, silence is not the fraud. Please read once again these two examples. You please listen. Please try to understand that silence in normal cases is never a fraud. It is fraud only these two cases where it is a duty of the party to speak the facts or where his silence is equal to speech. Right? Second point, the representation or assertion means statement must be a fact.
must be a fact. It means you should have the idea of difference between opinion and fact. Sir, my watch is maybe of 5,000 rupees. My watch is 5,000. First statement was opinion and second is fact. If party is giving just opinion, then it is not a fraud. See the example number 19. X, who is about to sell goods, says that cost him rupees 5,000. This statement is a fact. But if he says the goods are worth of rupees 5,000, it is a statement of opinion. And in case of opinion, there is no fraud. The representation must be made within knowledge of its falsity or without belief it's in truth. It means you are making the statement, you have the knowledge that you are making the false statement or you are hiding the truth. Right? If you are making the statement, false statement, you must have the knowledge that you are making a false statement. अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपको मालूम है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तभी वो fraud माना जाएगा. Other party must have been induced. Other party must have been induced to act upon the representation or assertion. Means you are trying to cheat the other party, but other party is not induced by your words. आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन धोखा हुआ ही नहीं पार्टी को, तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा. सी, A bought shares in a company on the faith of a prospectus which contained an untrue statement that B was a director of a company. A bought shares in a company on the faith of a prospectus which contained an untrue statement that one B was a director of the company. A had never heard of B, and therefore the statement was immaterial from this point of view. A's claim for damages in such case was dismissed because the untrue statement had not induced A to buy the share. Please read the example 20. I'm just repeating. Please read कीजिए इसको. मैं आपको क्लियर करता हूँ इस एग्जाम्पल को. Anjali is asking about example number 17. If there is not any relationship between X and Y, now it's a duty of the X reveal truth or not. No, if he is silent, that is not a fraud. इंड्यूस का मतलब क्या होता है? इंड्यूस का मतलब होता है फुसलाना, किसी को बातों में फुसलाना. फुसलाना का मतलब पता है? पता होगा यार. मम्मी कई बार भी फुसलाती है बातों में. अच्छा चलो ये कर लो, फिर हम ये काम करा देंगे, ये आपको पार्टी में लेके जाएंगे, आपको खाना बाहर खिलाएंगे, है ना? इंड्यूस. So see, come to the example number 20. A bought shares in a company on the faith of a prospectus that B was the director of the company, but actually B was not director of the company. Now A has filed the suit in the court against the company by saying that, sir, I have purchased the share of this company on the faith that B is the director. But they made the false statement and B was actually not director. So that is a fraud with me. I need the compensation. Court asked Mr. A, sir, you know who is B? क्या आपको पता है B कौन है? जानते हो आप? कोई रिश्तेदार है, कोई जानकार है, कोई बहुत बड़ा आदमी है? नहीं. A said no sir, I have no idea about B. तो सर जब आपको पता ही नहीं है, if you don't have any idea who is B, so how you can purchase the share on the faith of B, right? So in this case, uh, the court decided that although the fact was hiding or this is false facts in the prospectus, but you were not induced to purchase on this faith, right? आप भले झूठ बोला लेकिन वो आपके संग फ्रॉड नहीं हुआ. आपको इससे कोई मतलब नहीं था कि बी हो या नहीं हो. आपने किसी और भी से शेयर खरीदे, राइट? The other party must have been relied upon the representation and must be deceived.
अदर पार्टी मस्ट हैव बीन डिसीव्ड, मीन्स वास्तव में धोखा हुआ हो. फर्स्ट पॉइंट, यू आर मेकिंग a false statement, you are trying to deceive the party is not believing in your party is not believing in your words, then it is not fraud. Party has believed but there is no but believed but it could not be deceived. आपकी बात तो मानी उसने लेकिन धोखा नहीं हुआ, एक्चुअल में सही चीज उसके पास पहुंच गई, then it is not a fraud. See example number 21. T bought a cannon top from H on credit. The cannon was defective but H had plugged gunpowder in it. T did not examine the cannon, but when he used it, it burst before the payment. Held as the plug had not deceived T, he was not liable to pay. Please read example 21. I am explaining you. कि टी ने एक तोप खरीदी. अब तोप का पर्पस तो पता है नहीं कि सब मुझे किसी पड़ोसी को उड़ाना है तोप से, या मुझे घर के बाहर सजावट की लगानी है, राइट. तोप खरीदी, तोप डिफेक्टिव थी और उधार खरीदी, ऑन क्रेडिट उधार खरीदी, और पेमेंट करने से पहले ही उसने चेक करते हैं तोप को. तोप में जैसे गन पाउडर लगाया, बारूद लगाया, तोप ही फट गई, तोप ही फट गई. अब टीने का मैं तो पैसे दूंगा नहीं, कि तुम्हें से धोखा हुआ है, खराब तोप दे दी. तो आपको पर्पस बताना था. कोर्ट ने क्या कहा, भैया आपने ये नहीं बताया था कि आपको तोप किस पर्पस से चाहिए, राइट. प्लीज रीड दिस एग्जाम्पल वंस अगेन. Sir, it's written that he is liable to pay. Liable to pay means he has to make the payment of the तोप. तोप के पैसे दिए नहीं थे ना उसने. क्या था, टी ने तोप खरीदी, टी हैज परचेज दैट कैनन. तोप खरीदी और पेमेंट किया नहीं. पेमेंट करने से पहले क्या हुआ, तोप बस्ट हो गई. तो टी ने कहा मैं पेमेंट नहीं करूंगा. कोर्ट ने कहा यू हैव टू मेक द पेमेंट, राइट. यू आर द बायर, यू हैव टू मेक द पेमेंट. क्लियर. Sir, A is not responsible. Yes, A is not responsible. सर एग्जाम्पल 21 ही बता रहा हूँ बेटे. आप क्या चीज पूछ रहे हैं बेटा, कनीवेंस. एक बार आप देख लो बेटा गूगल पे जो आप वर्ड पूछ रहे हो. सर तो वाला नॉट लाइबल, यस. ठीक है, वेरी गुड. एंड लास्ट पॉइंट, एसेंशियल एलिमेंट, देयर मस्ट बी सम लॉस. इट मींस you are making a false statement, other party induced, deceived, but there is no loss. So what he will claim. आपने धोखा देने की कोशिश की, वो धोखे में आ गया, धोखे से बात भी मान ली, और लेकिन उसे लॉस कुछ नहीं हुआ. लॉस कुछ नहीं हुआ. इफ देयर इज नो लॉस, व्हाट विल यू क्लेम. अगर आपको कोई लॉस ही नहीं हुआ तो आप क्लेम क्या करें. एसेंशियल क्या क्या निकले, देयर मस्ट बी अ स्टेटमेंट, दैट मस्ट बी फॉल्स स्टेटमेंट. In statement should be with intention to deceive the other party is actually deceived, and there must be actual some loss to the party. I'm repeating, please note these points. First is making false statement. You must have the knowledge of the that you are making the false statement. The statement was made with intention to deceive the other party. The other party is actually deceived, and other party must have suffered some loss. Clear इतनी बात. अभी मैं देखता हूँ. Sir, this example is not in our book, so can we download? Please, you can download all the full complete PDF of this PPT.
क्लियर हो गया? देखिए एक बच्चे ने लिखा है कि सर एक बुक में स्टेटमेंट और दिया हुआ है, वो जितने हैं वो इन पॉइंट्स पर कवर्ड हो गए, अगर आपको लगता है तो आप एक बार उसको देख सकते हैं, ठीक है? जितने एसेंशियल्स हैं फ्रॉड के वो सारे मैंने कवर्ड कर लिए, ठीक है बेटा? कहाँ से डाउनलोड करें? बेटा ये पीपीटी जो पीडीएफ है वो अपलोड हो गई होगी साइट पर, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी ऐप पर अपलोड हो गई होगी। सर ये सब होना चाहिए फ्रॉड के लिए, यस बेटा। Consequences of fraud. Please read these consequences carefully because question may be on these points even today in our super over or some practice modules. ठीक है? A contract induced by fraud is voidable. What is consequence? Contract is voidable at the option of the party defrauded. जिसके साथ fraud हुआ, it can avoid the contract. Until it is avoided, it is valid. If you are not avoiding, you are not cancelling the contract perfectly valid. And the party with whom the fraud is done has the following remedies. What are the remedies? He can resign the contract. He can insist for the performance of the contract on the condition that he shall be put in the position in which he would have been if representation made had been true, and he can sue for damages. So for point number 2, you can write a simple words. He can insist for the genuine performance. He can insist for genuine performance and he can sue for damages for losses. अगर कोई लॉस हुआ है तो वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है. He can insist for genuine performance, right? This is again important question for 2 marks or 3 marks for exams. Contract which are not voidable. First, where the consent of the party to contract was caused by silence amounting to fraud and party could discover the truth by ordinary diligence. Ordinary diligence means अपने simple दिमाग से. Ordinary diligence, simple दिमाग. यानी अगर आप अपना दिमाग यूज करते तो यू कैन फाइंड दैट देयर इज फ्रॉड विद यू एंड यू हैव नॉट ट्राइड इट. मीन फॉर एग्जांपल, I asked Mr. X to sell my blue pen and he gave me the black pen. I'm watching that it is the black, but I'm believing in the faith of in the words of I'm believing in the words of shopkeeper. Then it cannot be fraud. भाई मैंने उससे ब्लू पेन मांगा, मुझे ब्लैक दे रहा है, मुझे दिख रहा है कि ब्लैक है, फिर भी मैं कहूँ नहीं कोई बात नहीं, दुकानदार की बात मान ली, बाद में मैं कहूँ फ्रॉड है, then it is not fraud. Where third party has acquired interest in the property for value. For example, where third party has acquired in the interest in the property for value. For example, I have purchased the property. I have purchased the property by making fraud, and I have given the on I have given it on the rent. मैंने प्रॉपर्टी ली फ्रॉड करके और उसको या तो रेंट उठा दिया या मैंने अगेंस्ट लोन ले लिया. थर्ड पार्टी हैज एक्वायर्ड द इंटरेस्ट, देन आई कैन नॉट रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट. I cannot avoid the contract. And where the party, after becoming aware of the misrepresentation of fraud, takes benefit under the contract or some other way, affirm it. मेरे साथ धोखा हुआ, I was cheated, and even after that, I am taking the benefit. For example, मैंने पेन लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने मांगा उससे ब्लू पेन, उसने ब्लैक दे दिया. मुझे घर आके जब मैंने चालू किया लिखना था, मुझे मालूम पड़ा दैट वाज द ब्लू पेन. उसके बाद में उसे यूज करता रहा, देन आई कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? एक बार पढ़ लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. रिजाइन मीन्स कैंसिल. रिजाइन मीन्स कैंसिल. Consequences again. Consequences, contract is voidable. It can be void by the party with whom fraud was done, but till it is avoided, it will be valid. I have already discussed in the first class. And what remedies? It can cancel the contract.
पार्टी कैन इंसिस्ट फॉर द जेन्युइन परफॉर्मेंस कि भैया मुझे ब्लू पेन चाहिए, ब्लू दे दो, आप ब्लैक रखो, अपने ब्लू दे दो. एंड इफ इट इज सम लॉस, कि मुझे कोई लॉस होता है तो उसके लिए मैं कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता हूं. नंबर 2 समझ नहीं आया. नंबर 2 समझ लो भाई. मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी आपको धोखा देकर, फ्रॉड से, और जब तक आप कोई डिसीजन लेते तब तक मैंने उस प्रॉपर्टी को किसी और को बेच दिया, या उस पर कोई लोन ले लिया, या उसे किराए पे उठा दिया, थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट बन गया उसमें, तब आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते. क्लियर हुआ उज्जवल? नाउ मिसरिप्रेजेंटेशन. Misrepresentation is like fraud, but only difference is that the party making the false statement, he has the idea of falseness in case of fraud, but in this case the party is genuine. If you are making a false statement, you have the knowledge that you are making the false statement, then it is fraud. If you are making the false statement and you have no idea that you are making a false statement, you are thinking that you are making a true statement, but actually it is false statement, then it is misrepresentation. जानबूझ के झूठ बोलना फ्रॉड, अनजाने में झूठ बोलना मिसरिप्रेजेंटेशन. इसको हिंदी में बोलते हैं मिथ्या वर्णन. सी द एग्जांपल. X says Y that his bike runs 70 kilometers per liter. X believes that he is true, but actually the bike runs 40 kilometers per liter. Here there is misinterpretation by X ने Y से कहा कि मेरी बाइक जो चलती है 70 किलोमीटर का एवरेज देती है, बट एक्चुअल में 40 का देती है. पर ये बात X को भी नहीं पता थी. X को भी लगता था कि बाइक 70 का एवरेज देती है. Then it is misinterpretation. If X knows the fact that bike is giving the average of 40 kilometers per liter, then it is fraud. Right? See the example number 23. While taking an insurance policy, X states that his age 25 years, believing it to be true. Actually, he is of 30 years old. He is guilty of misrepresentation, not fraud. X ने कहा सर 25 साल का हूं, उसे लगता था कि 25 साल का हूं, उसे यही मालूम था, बट एक्चुअल में वो 30 साल का है, तो वो क्या गिल्टी ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, गिल्टी ऑफ फ्रॉड नहीं माना जाएगा. When a party causes the other party to agreement to make a mistake as to the subject matter, no need to discuss. What are the consequences? Same consequences as that of fraud, except point number 3. Party can resign the contract. Party can insist for the genuine performance. Party can resign the contract. Party can insist for the genuine performance. Right? So these were the topics: coercion, undue influence, fraud, misrepresentation. If consent is obtained by the effect of coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, contract is voidable. Right? It means the party can avoid the contract. ये पॉइंट है डिफरेंस के, प्लीज एक बार रीड कर लेना बच्चों इनको. Now the topic is mistake. I have told you in the previous class, in case of mistake, contract either valid or void. Mistake are of two types: mistake of law and mistake of facts. Mistake of law of two types, again classified in two categories: mistake of law of country, mistake of law of foreign country. Mistake of law of country means, in simple words, a person of a country is presumed to have the knowledge of the law of that country. एक आदमी अगर किसी देश में रहता है तो माना जाता है कि उसे उस देश के कानून की जानकारी है, भले ही एक्चुअल में हो या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, A enters into a contract with B. A enters into a contract with B that enter contract with B to sell a particular medicine which is banned by the law, which is banned disease. Sorry, दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों.
A enters into a contract with B to sell the particular medicine. After some time, A says that I will not sell you the medicine. A asks B that he will not sell the medicine. He will not supply the medicine. B files the case in the court, and court gives the punishment of penalty and the charges. But A says in the court, sir, I don't have any idea that it is in this contract. If I will not perform in this contract, this will be the huge penalty. मुझे आइडिया नहीं था कि भाई इतनी पेनल्टी है, मुझे माफ कर दो, मैं ये काम नो. यू शुड हैव द नॉलेज द कॉन्ट्रैक्ट इज परफेक्टली वैलिड, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो आपने गवर्नमेंट से किया, गवर्नमेंट से क्या है कि भाई अगर आप ये परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड होगा. इट मींस अ पर्सन in case a person make a mistake of law of his country, the contract perfectly valid. It means a person making the contract should have the knowledge of that law of that country, but he is not expected he should the person from the foreign country will be capable to have the knowledge of our law. एक फॉरनर को नहीं उम्मीद कर सकते कि उसे इंडिया की लॉ की जानकारी होगी, राइट? फॉर एग्जांपल, a foreigner enter into the contract, but after that he said that I don't have the knowledge of law, the contract will be void. So in case of mistake of law of our country, contract law of country, contract will be valid. In case of mistake of law of foreign country, contract will be void. Contract perform नहीं करना है. Mistake of fact, bilateral mistake. It means both parties are under mistake. Unilateral mistake when only one party under mistake. यानी एक आदमी से गलती होगी तो यूनिलेटरल कहा जाएगा, दोनों ही गलती में है तो क्या कहा जाएगा? बायलेटरल. अभी एग्जाम्पल में भी आ रहे हैं बेटा, रुक जाओ. In this case contract will be void and in this case contract will be valid. So sometimes you will find that there may be a question that the law mistake of law foreign country will be similar to the bilateral mistake. Now come to the examples. Mistake of law country, a person cannot be allowed to get any relief on the ground that it had done a particular act in ignorance of law. एक आदमी को इस बात की कोई राहत नहीं मिलेगी, सर मुझे पता नहीं थी, लॉ पे जानकारी नहीं थी. माना जाए भाई आपको जानकारी हो या नहीं हो, लॉ के प्रोविजन आपके ऊपर लागू. फॉर एग्जाम्पल, A and B enters into a contract on erroneous belief, गलती से erroneous belief that a particular debt is barred by the limitation of law of limitation, the contract is not voidable. कह रहा है कि ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, लेकिन गलती है कि ये जो डेप्ट है, जो लायबिलिटी है, वो टाइम बार्ड हो गया, एक्चुअल में हुआ नहीं है, तो ये उनकी गलती. कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, दे हैव टू मेक द पेमेंट. मिस्टेक ऑफ लॉ फॉरेन कंट्री, सच ए मिस्टेक इज एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड एग्रीमेंट इन सच ए केस इज वॉइड. बायलैटरल मिस्टेक, दोनों पार्टियों की गलती है, बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक. A mistake may be of in case of existence. For example, A and B enters into a contract by which A will give his house on rent to B. एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ A और B के बीच में, जिसके द्वारा A B को क्या करेगा? अपना घर देगा किराए पर. A and B making a contract in a particular office, but they both are unaware that house was destroyed by flood. ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि इसमें ए अपना घर देगा बी को किराए पर, और ए और बी दोनों को ही नहीं पता था, दोनों की गलती थी, दोनों को ही नहीं पता था कि घर वो गिर चुका है. तो क्या माना जाएगा? बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एंड मिस्टेक इज एज टू द एग्जिस्टेंस, राइट? So bilateral mistake may be of in the nature of existence, identity, quality, quantity, title.
But one thing you should note, if both parties are, for examination point of view, you should note that when both parties are under mistake, contract is void. When only one party is under mistake, contract is valid. It is not voidable, right? This is the summary. Now time to discuss super over 3. If you have any query, please ask. एरनेस मतलब गलती, गलती से। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? परिणाम, उसके परिणाम क्या होंगे, राइट? मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, वो कहता है कि एक आपको ये जानकारी हमको आपको फॉरेन लॉ की जानकारी नहीं है, ये हम मानेंगे, और अगर इसकी गलती से कोई कॉन्टेक्ट करते हैं आप, तो वो कॉन्टेक्ट वॉइड माना जाएगा। सर बायलैटरल मिस्टेक एज पर टाइटल का एग्जाम्पल दे दीजिए। बायलैटरल मिस्टेक एज पर टाइटल मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कैलकुलेटर बेच रहा हूँ, मुझे लगता है ये मेरा कैलकुलेटर है, पर एक्चुअल में किसका है? ये मेरे नेबर का है। और जो खरीद रहा है उसे भी लगता है ये कैलकुलेटर मेरा है, तो हम दोनों ही अंडर मिस्टेक हैं, बट टाइटल क्या है? ओनरशिप मेरे पास नहीं है, राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और कोई क्वेरी? कितना खतरनाक सोच है। अंश वेरी गुड बेटा। अंश का क्वेश्चन दोनों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसने पूछा है। सर कोई एडल्ट माइनर के साथ कांटेक्ट करके बाद में बोले कि मिस्टेक हो गई, नहीं, यहाँ मिस्टेक नहीं चलेगी, गलती एक आदमी से हुई, राइट? वन साइडेड मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, वैलिड रहेगा। सर एग्जाम कैसे आएगा, प्लीज आप एक बार बता दीजिए क्वेश्चन में कैसे या क्या आएगा। एग्जाम में क्या आएगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन एग्जाम में जो आएगा उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसी एक दिन लेक्चर में आपको क्लियर बताऊंगा अभी, ठीक है? लेकिन एग्जाम में क्या आएगा ये तो मैं क्या कोई नहीं बता सकता, ये तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा कि एग्जाम में क्या आएगा, राइट? सर इफ अ कंपनी गिव्स ए फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कमर्शियल, इज इट ए मिसरिप्रेजेंटेशन? If making the false advertisement, it is fraud. अगर दो माइनर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड ही होगा, माइनर का आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो वाइड होगा। सूट फॉर रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन मतलब उसको वापस उसी पोजीशन में आना। क्लियर? अभी स्टार्ट करें क्या? चलिए। A promise made without intention of performing it amounts to misrepresentation, fraud, coercion, none of these. अभी मुझे आज सारे आंसर सही चाहिए सबसे, आज कोई गलती नहीं करेगा, ध्यान से पढ़ के समझ के आंसर करना है, वन बाय वन नहीं भेजना है। अंजलि यादव ने कहा सर आप तो इंस्टीट्यूट की तरफ से पढ़ाते हो तो बता दो पेपर में क्या आएगा। बेटा मैं पेपर में, मुझे पता ही नहीं पेपर में क्या आएगा, मुझे खुद नहीं पता चलता है, मुझे तो पेपर होने के बाद मालूम पड़ता है, जब पेपर बाहर आ जाता है तो बच्चा बता देता है। तो ये बच्चे मुझसे कैसे कैसे पाप करवाने के मूड में है कि सर पेपर आप इंस्टीट्यूट से पढ़ाते हो तो बता दो पेपर मुझे। कितना पाप लगेगा मुझे इसी बात सोच के भी। सेकंड क्वेश्चन, which of the following is not included in term fraud? Concealment of facts in good faith, when the court declares it fraudulent, when it is made with intention to deceive,
promise made without intention to perform. मुझे आज ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चे आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं. फ्रॉम वेयर आई हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चन. आपको चैट बॉक्स में आंसर देने हैं बेटे, एक साथ देने हैं सारे आंसर्स. डोंट सेंड आंसर वन बाय वन. प्लीज सेंड ऑल द आंसर इन वन शॉट. वन मैसेज में एक चैट में आंसर भेजने सारे आपको. A false statement of facts made without any intention to deceive the other party falls under the category of fraud, undue influence, coercion, misrepresentation. An agreement for the sale and purchase of horse, which unknown to both the parties was dead at the time of bargain, is void, valid, voidable, illegal. The aggrieved party, that is the party whose consent was obtained by fraud, may resign the contract only, may affirm the contract only, resign or affirm the contract, none of these. Mistake of foreign law is treated in the same manner as mistake of Indian law, mistake of fact, misrepresentation, fraud. स्टार्ट करते हैं. A promise made without intention of performing is fraud. Which of the following is not included in the term fraud? Concealment of facts in good faith, a false statement made without any intention to deceive, without any intention to deceive, under the category of misrepresentation. An agreement for sale and purchase of the horse which unknown to both the parties were dead at the time of bargain is void because it is a case of bilateral mistake. The agreed party, that is the party whose consent was obtained by fraud, can both options resign or affirm the contract. Mistake of foreign law is treated in the same manner as mistake of facts. चेक करते हैं किसके सही आंसर दिए हैं. मिस्टर सादिनैनी वर्धन. नेहा.
यशी, बिंदिया, महक, रवि, कार्तिकेय, कृतिका झा, मिसेस मंजूश्री, आयशा, मोहित, 6 में डाउट है इनको। उज्जवल को क्या डाउट है बेटा? क्लियर लिखा हुआ है, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ ट्रीटेड सेम मैनर बिकॉज, मैं बोला भी था, ये तो आपने सुना ही नहीं मेरी बात। बिकॉज इन केस ऑफ मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, राइट। बाय नेचर, अरिता का कहना है सर ये ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे भाई समझो, मैंने बताया दोनों केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इसलिए दे आर सेम नेचर, सेम मैनर, राइट। कॉन्ट्रैक्ट यूनिटर मिस्टेक वैलिड है, बस कर चुका बेटा मैं आपसे। सर यूनिलेटरल एंड बायलेटरल मिस्टेक आएगी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में तो 6 क्वेश्चन में बायलेटरल लिखना है आपको, राइट। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ बेटे। चलिए यहाँ पर अपन ब्रेक रख रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद अपन इसको कंप्लीट करेंगे, लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों।
Welcome back, बच्चों. Two more persons have give the correct answer, Miss Sakshi and Mr. Vishwas. One question from your side, sir. One important question, सी स्टडी के दौरान स्लीप कितने घंटे होनी चाहिए जिससे मूड स्विंग या स्ट्रेस ना हो? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो भैया? स्लीप प्रॉपर 6 आवर्स की स्लीप कम से कम रखिएगा, इससे कम नहीं रखनी है ना? ठीक है. सर आंसर शीट की चेकिंग आप आईसीआई के टीचर्स ही करते हैं? नहीं भैया, ये लोग करते हैं, और जो फैकल्टी है वो चेक भी नहीं कर सकते, दूसरे लोग करते हैं. ठीक है. नाउ पार्ट 3, legality of object and consideration. Now we are discussing section 23, which provides what are the object and consideration which are considered as unlawful. First point, if it is forbidden by law, prohibited by law, किसी चीज को करने से मना किया गया हो लॉ से, लॉ, if anything restricted by law and you are doing that is called unlawful object and consideration. For example, A contracted with B to deal in stolen goods, चोरी का माल. It is forbidden by law and the contract is. Second point, if the contract is such a nature that if permitted, it would defeat the provisions of any law. It means the contract is not directly defeating, but indirectly defeating. See the example number 26. A was licensed under as Excise Act to run a liquor shop. A को लाइसेंस मिला एक्साइज एक्ट में लीकर शॉप, शराब की दुकान चलाने के लिए. The act forbade the creation of partnership to run the shop. एक्ट ने मना कर दिया कि ये शॉप पार्टनरशिप में नहीं चलेंगी. द एक्ट फॉरबिड, restricted the creation of partnership to run the shop. It means these shop cannot be run in partnership. A and B took into the partnership for running that business. So this agreement was void. पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट वॉइड. पार्टनरशिप करना वॉइड थोड़ी ना है, लेकिन अगर पार्टनरशिप हो गई तो वो लॉ में जो लिखा हुआ है इन दैट वे में वो डिफीट करेगा. तो दिस कॉन्ट्रैक्ट, द रनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए एंड बी इनटू पार्टनरशिप इज. रीड कीजिए बच्चों. Again I am repeating point number 2. See, it was mentioned in the Excise Act that liquor shop should not be run in partnership, right? But can you tell me whether the doing business in partnership is illegal or unlawful? The answer is no. Partnership business can be run in partnership, but because the Excise Act provides that this liquor business should not be done in partnership, and if A is entering into partnership with B for running this business, so this is defeating the provisions indirect, right? So in this case, this contract between A and B for partnership will be void, will be unlawful. नेहा क्लियर हुआ क्या बेटा? Okay. Next point. If it is fraudulent, स्टडी का एग्जाम्पल बेटा मुझे क्वेरी में पूछ लेना, मैं बता दूंगा. Third point, if it is fraudulent means
nature to fraud. If the contract is in the nature to defraud the person, is making fraud against the people, it is fraudulent, and this is unlawful. See the example 27. A, B, C enter into partnership to run the business of fraud and distribute the earning in equal ratio. A, B, C, all the three are entering in partnership to run a fraudulent business. That means they make the fraud against the public, against the persons, and after that they will distribute the profit. This is void agreement. This is unlawful agreement. If it involves or implies injury to the person or property of another, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जिससे किसी पर्सन को या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा हो तो क्या माना जाएगा? अनलॉफुल. If the contract is in such nature that it will hurt the person or the property of any other person, this will be considered as unlawful contract. See the example 28. A contract with B to burn the house of C. A contract with B to burn the house of C. As the contract involves the property of C, this is unlawful and void contract. Fifth point, if the court regard as immoral, immoral means bad character. See the example 29. A asks B, if you arrange a girl for marriage with me, I will give you 50,000. क्या आप कोई एक लड़की अरेंज कर देंगे मैरिज के लिए तो मैं आपको 50,000 दूंगा. दिस इज अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, राइट. इमोरल का मैंने मीनिंग लिख दिया बेटा. सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल? मुझे लगता है आज आपकी पहली क्लास है. आप फर्स्ट क्लास इसको रिकॉर्डेड लेक्चर चेक कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल. मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है बेटे. Next point, when court regards it opposed to public policy. Opposed to public policy means against the public welfare. अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर. अगर कोर्ट की नजरों में कोई कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक के वेलफेयर के अगेंस्ट है तो वो अनलॉफुल माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा. फर्स्ट इज ट्रेडिंग विद एनिमी. इफ यू एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द सिटीजन of our enemy country, the contract will be void. Stifling prosecution. Please note in your notebooks, in your diaries, because maximum time students ask us what is the meaning of stifling prosecution. It is an agreement to abstain from prosecuting a person for an offense. Please read कर लीजिए इसको एक बार, फिर मैं समझाता हूँ. एग्जाम्पल रीड कीजिए. प्रोसिक्यूशन, किसी के ऊपर केस फाइल करना, सूट फाइल करना, प्रोसिक्यूट करना. किसी को प्रोसिक्यूशन से बचाने के लिए, इफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड टू एब्सटेन फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग फॉर एन ऑफेंस, इज कॉल्ड स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. See the example 31. A promises to drop a prosecution. A ने प्रॉमिस किया कि वो प्रोसिक्यूशन केस ड्रॉप कर देगा which he has instituted against B for robbery and B promises to restore the stolen money. क्या है? B has made the robbery against in the house of A. A has filed the case against B. But B promised to A, sir, I please drop the case against me. I will restore your stolen property. जितना मैंने चुराया सब वापस कर दूंगा. मेरे खिलाफ केस फाइल मत करो, केस वापस ले लो. So this agreement between A and B for dropping the prosecution will be void, will be unlawful, because robbery is the crime. And the agreement between A and B in this example is just to refrain Mr. B from the punishment.
बी ने घर के डाका डाला, एक एक घर में, एक एक घर में डाका डाला। ए ने क्या करा, सूट फाइल करा बी के अगेंस्ट। बी ने क्या कहा, सर मेरे खिलाफ सूट फाइल मत करिए, मैं आपको सारा पैसा वापस कर दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनलॉफुल है। Sir, when a person enters into a contract with other country person, then the what take after the contract. मैडम ये मैं सब डिस्कस कर चुका हूँ, आप मुझसे जो पूछ रही हैं, प्लीज एक्सट्रीमली सॉरी टू से, ये सारा ऑलरेडी कल लास्ट क्लास में हो चुका था। आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट क्लास। तो आपको जो पूछना है, आप वो प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर चेक कर लीजिए। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन से बचाना, ठीक है। सर कंपाउंडेबल और अनकंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल ऑफेंस वो होते हैं, अभी आ रहा हूं उस पे भी, बट ए कंप्रोमाइज इन केस ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मींस वो क्राइम जिनको लॉ ने कहा है कि अगर आप सेटलमेंट कर लेते हैं तो खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक एक टेनेंट ने अपने ओनर को रेंट नहीं दिया, रेंट नहीं दिया, उसने केस फाइल किया ओनर ने, टेनेंट ने कहा सर मैं सारा रेंट दे दूंगा, विद इंटरेस्ट दे दूंगा, ठीक है सेटलमेंट हो गया। आप जैसे कंपाउंडेबल, राइट। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, प्लीज लिसन केयरफुली, please try to understand the example what I'm saying to you. A ask B, listen, A ask B, please file a fake case against C. A ask B, please file a fake case against C. Please file a fake case against C, and I will give all the expenses for this purpose to you. ए ने बी से कहा कि तुम सी के अगेंस्ट केस फाइल कर दो, एक फेक केस फाइल कर दो, उसे परेशान करना है मुझे, और जितना भी खर्चा होगा मैं पे करूंगा। ए आस्क बी, प्लीज फाइल अ फेक केस अगेंस्ट सी, आई विल मेंटेन ऑल द एक्सपेंसेस फॉर दिस पर्पस, आई विल मेंटेन ऑल द एक्सपेंसेस फॉर दिस पर्पस, मैं सारे खर्चे मेंटेन करूंगा। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी is called contract for maintenance, contract for maintenance, and this contract is void. See example 32। अभी सब यही रहना, केवल मेंटेनेंस पढ़ना, चैम्पर्टी अभी बाद में, पहले पहले मेंटेनेंस पर बात करो आप। A offers to pay B rupees 2000 if B will sue C. A's motive is to hurt C. This agreement between A and B is a maintenance agreement. See, what is the maintenance as per the law? Maintenance is an agreement to give assistance, financial or otherwise, to another to enable him to bring or defend legal proceedings when the person giving assistance has got no legal interest of his own in the subject matter. सिर्फ एक परेशान करने के मतलब से बी का कोई इंटरेस्ट नहीं था इस मैटर में, बी को तो पैसे मिले। मेंटेनेंस क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंटेनेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, हम अगेन रिपीटिंग, सबको क्लियर हो गया, लेकिन अभी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे दूसरे टॉपिक पे आना है। क्या था? ए आस्क बी, प्लीज फाइल अ फेक केस अगेंस्ट सी। ए आस्क बी, प्लीज फाइल अ फेक केस अगेंस्ट सी, and I will give you all the expenses to maintain this suit. Right? This is the case of maintenance. But if in this example A add one more line, so listen,
A asked B, please file a fake case against C. I will maintain all the expenses, but if you receive any compensation from C, I will share in that compensation. A ने B से कहा कि तुम C के खिलाफ एक केस फाइल कर दो, फेक केस, जितना खर्चा होगा मैं पे करूंगा क्योंकि मुझे परेशान करना है। लेकिन एक बात ऐड कर दी उसने कि अगर तुम्हें सी से कोई कॉम्पनसेशन मिलता है तो उसमें मेरा भी शेयर होगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ चैम्पर्टी। मींस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अगर ऐड हो जाता है इट इज चैम्पर्टी, इफ शेयरिंग प्रॉफिट इज नॉट इंक्लूडेड देन इट इज ओनली मेंटेनेंस। Champerty is an agreement whereby one party is to assist another to bring an action for recovering the money or property and is to share in the proceeds of action. Example 33, A agrees to pay the expenses if B sues C and B agrees to give the one half of any proceed received by B as a result of the said. If the object of contract is just to assist the other party in making, listen, if the object of contract is just to assist the other party in making a reasonable claim to contract, then to have a share profit, contract is valid. यानी in this example अगर B का क्लेम सही था, B का वास्तव में उसको केस करना था C के ऊपर, B has actually have the point to file the case against the C and A is just helping him because B is genuine filing the case. And A share ki sir, okay, I am helping you for case, but I will charge some commission or some share of the profit. Then it is valid. But actually, I've discussed in example 32 and 33, P has no interest to file in the case against C. तो वो मेंटेनेंस चैम्पर्टी कहलाएंगे. And both agreement of maintenance and chemparty are unlawful. Both agreement of maintenance chemparty are unlawful and void. Right? Sir, what will be the result of agreement related to the approach to public policy? भैया वही तो पढ़ रहे हैं, आपने ध्यान ही नहीं दिया बच्चे. ये वही तो पढ़ रहे हैं, कोर्ट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के तो पॉइंट है. इन सब में कॉन्टेक्ट क्या है? वॉइड है. राइट. नेक्स्ट पॉइंट, अभी पहले मुझे बताओ क्लियर हुआ क्या मेंटेनेंस चैम्पर्टी? एनी डाउट इन दीज 2 पॉइंट्स? मेंटेनेंस में क्या है? केवल उसके फेक केस के खर्चे मेंटेन कर रहा है. और चैम्पर्टी में क्या है कि अगर कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा तो वो हम शेयर करेंगे. राइट. वेरी गुड, वेरी गुड. स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब सजा, उसको स्टिफलिंग में बचाना, उसको गलत तरीके से बचाने को बोलेंगे स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन. इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, न्यायिक प्रक्रिया में इंटरफेयर करना. इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ जस्टिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस. सी, an agreement to pay a bribe of rupees 5 lakh to a judge to change his decision. But judge is taking the decision, judge is making the justice. You are giving, you are entering the contract to give the bribe. This is unlawful. Marriage brokerage contract. Marriage brokerage contract are opposite to public policy. Commission बाजी होगा तो वो क्या होते हैं? Opposed to public policy. They are void. Right? Some of you will ask, sir, what about marriage bureaus? The marriage bureaus are charging only consultancy fees. They are not charging the brokerage. Interest against the obligations. Interest means benefit, obligation means duty.
It means if you are charging anything for your duties for which you are already bound to perform, then it is unlawful. Following are the examples of agreement that are void as they tend to create an interest against obligations. Interest against obligations. The object of such agreement is opposed to public policy. See the example. An agreement by an agent to receive without his principal's consent compensation from another for the performance of agency is invalid. Means if suppose Mr. Principal has appointed his agent and agent is charging personal commission, secret commission from third party, it is invalid because it's not your duty. You are charging anything from your for your duties. A, who is the manager of a firm, agrees to pass a contract to X if X pays rupees 2000 privately. A मैनेजर है फर्म का, उसने एक्स को बोला कि साहब मैं अपने ऑफिस की डिटेल दे दूंगा आपको, कॉन्टैक्ट दे दूंगा मैं आपके, लेकिन मुझे 2000 रुपए चाहिए आपसे कमीशन के. द एग्रीमेंट इज सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस. सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस लाइक एग्रीमेंट टू सेल ट्रांसफर. सेल और ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ऑफिस, कहते हैं ना कि आपने ट्रांसफर कराना है, उसके लिए पैसा देना है कि मैं ट्रांसफर यहाँ पे करा दो. दीज आर वॉइड. अरे फॉर पेमेंट फॉर प्रिक्योरमेंट of titles like Padam Vibhushan, Paramveer Chakra, Padma Vibhushan, Paramveer Chakra, और मॉनेटरी फॉर कॉरी मॉनेटरी कंसिलेशन. मतलब आपको परमवीर चक्र किया था ना अवार्ड सेरेमनी में, अवार्ड के लिए पैसे देने. दीज आर वॉइड. These agreements are void. See the example number 38. An agreement to pay money to public servant in order to induce him to retire from his office so that another person may secure the appointment is void. आप पेमेंट any agreement to pay money to public servant by which you are inducing him that you must take the retirement so that another person can take the job. कि भैया हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप नौकरी छोड़ दो ताकि दूसरे को नौकरी मिल जाए. These are void agreement, unlawful agreement. An agreement to procure a public recognition like Padam Vibhushan for reward is void. कि आप पद्म विभूषण में अरेंज कर दीजिए, मैं उसको पैसे दूंगा आपको मैं, पर मुझे मिलना चाहिए. These are void agreement. Agreement for creation of monopolies. If any agreement by which a monopoly is created, as per the law, contract is void. See the example number 40. A contract with municipal corporation for disallowing all the shopkeepers from market other than A. Hence, contract is void. A ने कॉन्ट्रैक्ट किया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि सर बाकी दुकानदारों को हटा दो, मैं आपको पैसे दूंगा, बाकी दुकानदार सब हटा दो, सिर्फ मेरी सेल लगनी चाहिए ताकि मैं मोनोपोली क्रिएट कर सकूं, मेरे प्राइस जो चाहूं क्लेम कर सकूं. These type of contract are void because these are considered as opposed to public policy. Any doubt up to this point? सिंपल कहें तो प्रॉफिट दोनों में शेयर होगा तो वो चैम्पर्टी, और केवल खर्चा पे होगा परेशान करने के लिए तो मेंटेनेंस. यस. नाउ a question may be asked in your exams of what are the agreements which are expressly declared void. So these are the list of those agreements. एफ एंड एच पॉइंट. बेटा मैंने एफ पॉइंट बताया आपको, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, यानी कि अगर आपकी जो ड्यूटीज हैं जो आपको करनी है उसके अगेंस्ट को चार्ज कर रहे हैं. मैंने आपको एजेंट अपॉइंट किया कि मैंने आपको एजेंट अपॉइंट किया कि आप मेरे लिए आपको मेरा घर बेचना है, उसके लिए मैं आपको कुछ कॉम्पनसेशन दे रहा हूँ, बट व्हाट यू आर डूइंग, आप जो पार्टी से भी कमीशन चार्ज कर रहे हैं, तो ये आपकी अपनी जो गलत चीज पे आप क्लेम कर रहे हैं, ये क्या होगा, अनलॉफुल एग्रीमेंट. नेक्स्ट पॉइंट था आपका एच पॉइंट, एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली. सपोज ए ने क्या किया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया आप एक काम करो, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा महीने के महीने, पर इस सब्जी मंडी में से सारी सब्जी की ठेला हटवा दो, सिर्फ मेरी ठेला लगेगी ताकि मैं एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सकूं, जो मर्जी चार्ज कर सकूं. तो मोनोपोली क्रिएट हो रही है. दीज टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर
unlawful agreement, right? Now, the list of agreement which are void. Agreement by competent parties, section 11, we have already discussed in first part of unit 3. Agreement made under a mutual mistake of fact, section 20, we have already discussed. Agreement, the consideration or object of which it is unlawful, section 23, we have just discussed. Agreement, the consideration or object of which is unlawful in part. In 23, whole object or consideration void, but in section 24 says if the consideration object is unlawful in part, even that contract is void. Agreement made without consideration, unit 2 we have discussed, section 25. Agreement in restraint of marriage is void, but एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को शादी करने से रोकने कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, बट नॉट दिस सेक्शन इज नॉट फॉर चाइल्ड मैरिज बिकॉज चाइल्ड मैरिज इज इलीगल इन आवर. एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को व्यापार करने से रोकने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम उसको व्यापार नहीं करने देंगे, उसको ट्रेड नहीं करने देंगे, दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड. रीड करिए बच्चों. But this rule is subject to some exceptions. इनकॉम्पिटेंट पार्टीज डिस्कस कर चुके बेटा हम, माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऑलरेडी डिस्कस बेटा. It means in the following cases restraint of trade is valid. Any agreement in restraint of trade is valid. Exception to point number J. J नहीं है ये, point number 7 कर लीजिए इसको. 7. Sale of goodwill. If a person is selling his goodwill, if a person is selling his goodwill, then he may be restrained from carrying on the similar business within specified local limits or for a special time, provided that such limit appear to the court reasonable with regard to the being had to the nature of business. If means, suppose Mr. X is selling his goodwill to Mr. Y, so Mr. Y can make the restriction on Mr. X that you will not doing the same business in particular area for particular time. भाई अगर आप अपनी गुडविल बेच रहे हो, नाम बेच रहे हो, तो उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया आप गुडविल का, तो जो खरीद रहा है गुडविल वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है गुडविल बेचने वाले पर कि आप पर्टिकुलर बिजनेस नहीं करेंगे, पर्टिकुलर एरिया में नहीं करेंगे, पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं करेंगे, राइट. लेकिन लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन कोर्ट की नजरों में अगर अनरीजनेबल हुई तो कोर्ट इन रेस्ट्रिक्शन को हटा सकता है. वो पढ़ लीजिए बच्चों. वही चल रहा है बेटा, एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को व्यापार, आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट बाय विच यू कैन रेस्ट्रेन एनी वन पर्सन फ्रॉम मेकिंग फॉर ट्रेड और फॉर बिजनेस. पार्टनर्स एग्रीमेंट, दिस इज इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स. तो प्लीज रीड दिस पॉइंट, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना बट एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए. A partner shall not carry on any business other than that of firm while he is partner. A partner shall not carry on the business other than that of firm while he is partner. There may be an agreement by a new partner with other partners that new partner will not do any business other than that of firm. अगर कोई पार्टनर, नया पार्टनर कॉन्टेक्ट करता है, किससे कॉन्टेक्ट करता है, पार्टनर कॉन्टेक्ट करता है किससे, पुराने पार्टनर से, कि भैया जब तक वो पार्टनर रहेगा कोई अपना बिजनेस नहीं करेगा, सिर्फ यही बिजनेस करेगा, एंड दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज परफेक्टली वैलिड. A partner shall not carry on business other than that of firm while he is partner. Second point,
An outgoing partner may agree with his partner not to carry on. Outgoing partner, retiring partner, may agree with his partner not to carry on the business similar to that of firm within a specified period or within a specified local limits. एक पार्टनर जो छोड़ के जा रहा है, he can enter into the agreement with other partner that he will not do the same business with particular area, particular time limit. This agreement is again valid agreement, even it is restriction on the trade. C point, partners may upon or an in anticipation of the dissolution of the firm. पार्टनर फर्म डिसॉल्व हो गई है, डिसॉल्व होने जा रही है, इन एंटीसिपेशन टू डिसॉल्व होने जा रही है. Make an agreement that some or all of them will not carry on a business similar to that of firm. पार्टनर फर्म, एक फर्म डिसॉल्व हो रही है, डिसॉल्व होने जा रही है, तो पार्टनर आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं कि वो सेम बिजनेस नहीं करेंगे. दिस एग्रीमेंट अगेन विल बी वैलिड. वेयर द गुडविल ऑफ द फर्म इज सोल्ड. पार्टनरशिप फर्म की गुडविल बेच दी, हमने नाम ही बेच दिया फर्म का. A partner may carry on a business competing with that of the buyer and he may advertise such business. अगर मान लीजिए किसी को आपने गुडविल बेच दी, तो वो गुडविल को, उस नाम को यूज करेगा, उसका एडवर्टाइज नाम यूज कर सकता है. But where of a firm is sold after dissolution, a partner, old partner, may carry on the competing business with that of buyer and he may advertise such business. फर्म ने अपना नाम बेच दिया किसी और को, पुराने पार्टनर है, वो क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सेम बिजनेस कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, बट ही मे नॉट यूज फर्म नेम, फर्म का नाम यूज नहीं करेंगे. he they may not represent himself as carrying on the business of the firm. ये वो नहीं कहेंगे कि वो पुराना बिजनेस ही चला रहे हैं. ऑन सॉलिसिट, मांगना, सॉलिसिट कस्टम्स ऑफ पर्सन, कस्टमर से ये नहीं कहेंगे कि भैया हम पुराने लोग ही आ जाओ. कस्टमर को मांगेंगे नहीं कि हम सब वही फर्म है जो पहले थी, उसी का पार्टनर हूं मैं, इसको यूज नहीं करेंगे. ई पॉइंट, any partner may upon the sale of goodwill of firm make an agreement with the buyer that such partner will not carry on the business similar that of firm within specified period or specified local limit. गुडविल सेल होने के बाद जो बायर है वो पार्टनर से कांटेक्ट कर सकता है. he can enter to the contact with partner. That partner will not use the firm name, they will not do the same business in particular area. If this agreement is there, it is valid agreement. एक बार रीडिंग कर लीजिए बच्चों फटाफट से. पेटेंट और कॉपीराइट्स पे भी यूज होते हैं. यस, सर स्टडी मटेरियल में नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ओवरऑल जाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रीडिंग कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि, लेकिन मालूम होना चाहिए पार्ट ऑफ लॉ, राइट. Trade combination, unions, trade unions. But if these trade unions are made for the benefit or for the benefit of public, they are perfectly valid. If the trade union enters into an agreement which are beneficial for public, that is, they are valid. See the example number 41. An agreement between certain ice manufacturing companies not to sell ice below a stated price and to divide the profit in certain proportion is not void. Such agreement are neither in restraint of trade or nor opposed to public policy. एक एग्रीमेंट हुआ आइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बीच में कि वो मिनिमम प्राइस यही रखेंगे आइसक्रीम का, क्यों, ताकि क्वालिटी मेंटेन रहे. दिस इज अ वैलिड एग्रीमेंट. Service agreement, it means agreement made by employees with the employers. If an employee is entered into an agreement with the employer that he will not do anything other than this job, it is perfectly valid. But he will not do any business even after leaving the job, this is invalid. See the point number 4. Sometimes an employee by the terms of his service is prevented from accepting any other engagement during his employment.
or similar engagement after the termination of service खत्म होने के बाद भी. So as regard the first restraint, it is valid because sometimes you see that doctors are usually debarred from private practice during the term of their employment. कई बार क्या होता है डॉक्टर्स को कहा जाता है भाई आप जॉब कर रहे हो तो प्रैक्टिस नहीं करोगे. बट एज रिगार्ड द सेकेंड कि भैया जॉब छोड़ने के बाद भी कोई काम नहीं करोगे, इट इज इनवैलिड एंड इट इज. प्लीज रीड पॉइंट नंबर 3 and 4. Sir, do we have to remember all the points given in the book for exam? Definitely. Exam may be asked from your book from any place. Agreement in legal restraint of legal proceedings. लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकने का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स. An agreement in restraint of legal proceeding is one by which one party is restricted absolutely from enforcing his right under a contract through a court or which abridges the usual period of starting legal proceeding. A contract of this nature is void. It means, for example, if A and B enters into a contract, A and B enters into a contract that suppose for selling of goods, A will sell the goods to B. And they also add the line in their agreement that if B will not make the payment on time, A will never file a suit. A और B कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि A B को सामान बेचेगा और ये लाइन ऐड कर लेते हैं कि भैया अगर मान लो B ने पेमेंट भी नहीं किया तब भी A इस पर सूट फाइल नहीं करेगा. These agreements are called restraint in legal proceedings and they are void. But for this point, there are some exceptions. One thing before this discussing this exception, you should understand the term arbitration. Anyone have idea what is the arbitration? Arbitration process or what is the arbitration? Any one of you have idea? No one? No idea? Punch. उज्जवल कह रहे हैं punch. Yes, good. According to content, no. Riskless profit, no. Riskless profit, no. I. Other ways in which we can seek relief for a suit. Yes, you can. You are have something. You are right. Resolving dispute. No, this is a way of resolving dispute. Not resolving dispute is arbitration. Very good, Bindiya. Consultation or mediation. You can say some sort. Resolving dispute outside the court. Okay. Directionless. No. What I saying. ना पर्पस तो आपने बता दिया आर्बिट्रेशन पर्पस क्या है रिड्यूस द कोर्ट केसेस लेकिन व्हाट इज द आर्बिट्रेशन. ओके. मध्यस्थता. अरे बाप रे ये तो किसने कहीं से कॉपी मारा है अभी तक. कहीं से इतने देखा डाला मतलब डाल दो फिर क्या है गूगल पर डाल के कॉपी करके भेज दिया. मध्यस्थता. ओके. I'm just giving the small idea about arbitration because this is a subject 100 mark subject paper in your self-paced module. set D और C मुझे याद नहीं set D में है.
right? But please have a small idea. In arbitration process, suppose there is dispute between A and B. तो आर्बिट्रेशन प्रोसेस कहता है भैया आप दोनों मिलके प्लीज डिसाइड वन पर्सन एज आर्बिट्रेटर. आप दोनों मिलके एक आदमी को डिसाइड कर लो आर्बिट्रेटर, who will listen your points and decide the matter. You need not to go to the court. कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों मिलकर एक आदमी डिसाइड करो, वो आपका कहलाएगा सरपंच. सरपंच कहलाएगा और वो जो डिसीजन देगा वो आपको मानना पड़ेगा, वो आपकी बातें सुनेगा, आपको डिसीजन देगा. बट ए सेज कि सर आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द नेम ऑफ सी, बट बी वाज कंफर्टेबल. तो इन दिस केस बोथ ए एंड बी मेक द सेपरेट पर्सन. सपोज बी ए एंड बी ने मिला के ए ने कर अपॉइंट कर लिया डी को और सी ने बी ने कर लिया सी को. ये दोनों मिलके भी एक पर्सन अपॉइंट कर सकते, जस्ट लाइक पंचायत. तो इन दिस प्रोसेस यू नीड नॉट टू गो टू द कोर्ट, राइट? सपोज एन एग्रीमेंट, अभी जो एग्जांपल डिस्कस किया था मैंने अभी आपसे, आई हैव जस्ट रिसेंटली डिस्कस द एग्जांपल ए एंड बी, in which A will sell some goods to B and we will make the payment. A और B के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि मैं आपको गुड्स बेचूंगा और बी ने का पेमेंट करूंगा. उस एग्रीमेंट में उन्होंने एक चीज ऐड कर ली. दे ऐड वन लाइन इन दैट एग्रीमेंट दैट फॉर एनी dispute they will not refer to court, they will refer to arbitration. They will decide the dispute by arbitration process. Although they have mentioned that they will not go to the court, but they are finding this resolution by another way, which is allowed by the law. So if the contract is like that, in which it was mentioned that you need not to go to the court, you will not go to the court for dispute, you can solve by arbitration, it is valid. It will not be considered as restraint of legal proceeding. Now come to the exception. Exception 1. What it says? A contract by which the parties agree that any dispute between them in respect of any subject shall be referred to arbitration and that only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable will be the valid contract. यानी कि अगर आपने ये एग्रीमेंट में लिख लिया कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, आर्बिट्रेशन के जरिए सॉल्व करेंगे और जो फाइनल होगा उसे मान लेंगे. This is perfectly valid. Second point, similarly a contract by which the parties agree to refer the arbitration any question between them, any question means any dispute between them which have already arisen or which may arise in future is valid, but such agreement in the writing. Such agreement must be in writing. यानी agreement जो आप कर रहे हैं arbitration के लिए वो writing में होना चाहिए. क्लियर? एक बार रीड कर लीजिए बच्चों फटाफट से. Settlement good. सर आर्बिट्रेशन नेगोशिएशन इज सेम और डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंस है, बट मैं उसको अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा. ओके, यस गुड, वेरी गुड यशी, राइट. ठीक है. नाउ एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन. भैया कोई ऐसा एग्रीमेंट जो अनसर्टेन होगा उसे क्या बोलेंगे हम? वॉइड. सी द एग्जांपल 42. बहुत सिंपल सी वर्ड. A agreed to sell 100 tons of oil. There is nothing to show what kind of oil was intended. The agreement is void for uncertainty. I have already discussed this point. Wagering agreement. Wagering or wager. Section 30. Sattebaji. A wagering agreement between two by which one promised to pay money or money's worth on the happening of some uncertain event in consideration of the other parties promise to pay if the event does not happen. After the first we discuss the example 45, then we will come on section 30. Come to the example 45.
A and B enters into an agreement that A shall pay B rupees 100 if it rains on Monday. A and B enter into an agreement that A shall pay B rupees 100 if it rains on Monday, and B shall pay A the same amount if does not rain. It is a wagering agreement. A ने B से कहा कि मंडे को अगर बारिश होगी तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, और अगर नहीं हुई तो आप मुझे देंगे. यानी कि कंसिडरेशन इज मनी और मनी इज वर्थ. इन सी मनी और मनी इज वर्थ. कंसिडरेशन क्या है? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ. Full transaction is dependent on the happening or non-happening of an event, right? खालिद जी अभी पहले सेशन तो हो जाने दो, तब मैं आपको अलाउ करूंगा. चल रहा है सेशन, टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करिए. यस. तो पहले एक चीज समझिए, मेरा पूरा इस कंसेप्ट को समझिए. इसी में ऐसी स्लाइड समझा रहा हूं, ध्यान से. See, in example A and 45, A enters into agreement with B that if it rains on Monday, I will make you payment of 100 rupees. If it will not rain on Monday, you will make the payment of 100 rupees. This is called the wagering agreement, or these are the void agreement, right? In state of Gujarat and Maharashtra, these are illegal agreement. वॉइड तो सब जगह है पूरे हिंदुस्तान में, बट इसमें स्पेशली इलीगल कर दिया गया है. गुजरात और महाराष्ट्र में वहां पे लॉटरी को बैन कर दिया गया, सट्टेबाजी को बैन, राइट. I add one more contract in this example. I add one more point in this example. Suppose in this example, A and B decide that they contract with C. A और B को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है. A and B contract with C that we will make the deposit of 100 rupees with you. कि A will give the 100 rupees to C and B will give the 100 rupees to C, with the condition that it's the duty of the C to return the whole amount to the winner. कि जो भी जीतेगा उसे आप पूरा अमाउंट दे दीजिए. And they enters in again in this contract for a commission. A and B both say to C, if A and B both enter in contract with C that the winner will give the rupees 10 as commission to C. क्या समझ में आया मेरे को? A and B ने कॉन्ट्रैक्ट किया. A ने क्या कहा कि अगर बारिश होगी तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, नहीं होगी तुम मुझे 100 रुपए दोगे. और दोनों ने सी को हायर की, सी से कहा भैया तुम ऐसा करो 100 रुपए रख लो हमारे, और जो जीतेगा उसे आप वापस कर देना पूरे पैसे. और इस केस में जो विनर है जो विनर है वो आपको 10 रुपए देगा, राइट. जो विनर 10 रुपए देगा. तो इन दिस प्रोसेस नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स between A and B, between A and C, between B and C. Yes or no? 3 कॉन्ट्रैक्ट हुए. A and B wagering contract, it is void. It means if it rains on Monday, B has no right to recover the amount from A because the contract between A and B is void. यहां तक मेरी बात समझ में आई? यहां तक जो पूछना पूछ लो बच्चों मुझसे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसी पॉइंट पर. कोई डाउट यहां तक? मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों, ठीक है. फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन A and B is void, so A cannot recover anything from B even he is the winner. B cannot recover anything from A even he is winner, right?
स्टेक का मतलब, रुक जाओ बच्चे पहले ये समझो, ठीक है? जो मैं समझा रहा हूँ बेटा वो समझने की कोशिश करो। वो चीज निकल जाएगी और एग्जाम में आ गई तो फिर क्या होगा? नाउ सी हैज द मनी of A and B, 100 rupees, right? As per the law, the agreement between A and C and B and C are collateral agreement, supporting agreement. And these contracts are perfectly valid. Yani contract between A and C is valid, B and C is valid. Kya contract? What was the contract? Winner will give rupees 10 to C. Winner will give 10 rupees to C. Right? Winner will give 10 rupees to C. Now suppose in this agreement between A and B, which was void, A wins, A जीत जाता है. In this case, A is liable to make the payment of 10 rupees to C because the agreement between A and C for rupees 10 was valid. A liable है 10 रुपए देने के लिए, agreement A और C का valid था. But how much amount A can recover from C? Anybody can tell me? If A won the bet, won the agreement contract, won the bet of this rain, then how much amount can A recover from C? अगर A जीत जाता है इस शर्त में तो A C से कितने रुपए रिकवर कर सकता है? Arita is saying 90. मिस्टर वर्धन प्लीज ध्यान से सुनिए बेटा, 10 रुपए उसे लेने नहीं है, देने हैं एक. My question is how much amount A can recover from C? Please. 90, good. Very good. Sarla is saying 190. No, the answer is wrong. Because the contract between A and B was void. So A has the right only for 100 of his own. वो अपने 100 रुपए रिकवर कर सकता है, लेकिन उसने 10 रुपए का प्रॉमिस किया था जीतने पर, तो वो एग्रीमेंट वैलिड है. तो इन दिस केस A कैन रिकवर ओनली रुपीज 10 फ्रॉम C. A can recover only rupees 10 from C. Sorry, 90 rupees from C. I'm sorry. A can recover only 90 rupees from C. And B can recover full amount of rupees 100 from C. B अपने पूरे 100 रुपीज लेगा C से कि भैया मैं तो दिए थे, वापस कर मुझे पैसे. Right? Suppose one more line to be added in this point. If suppose C has given all the 190 rupees to A, C ने पूरे 190 रुपए दे दिए गलती से A को, तो B will recover his 100 rupees from A, not from C. अगर C ने गलती से पूरे 190 रुपए दे दिए A को, तो जो 100 रुपए B के थे वो B A से रिकवर करेगा, C से नहीं करेगा. अब पूछो कोई. C अगर भाग गया तो भैया हम चोरों की बात नहीं कर रहे हैं, चोरों पर लगने वाली सजा की बात कर रहे हैं, हम लॉ पढ़ रहे हैं, चोरों को रास्ता थोड़ी दिखा रहे हैं बेटा. 200 रुपए गलत जवाब. ए के साथ फ्रॉड हो गया. काव्यांश कह रहे हैं भैया आपने गलत काम के लिए कॉन्टेक्ट किया था. क्योंकि बिकॉज ए का जो बच्चे कह रहे हैं सर ए को बेचारा क्या जीतने बाद 90 रुपए मिले, तो भैया किसने कहा था गलत काम करने के लिए आपसे? क्लियर हुई बात? अब ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. सी बीच में ही प्रॉफिट ले गया. वेरी गुड, इतने दिमाग लगाया आपने. वेरी गुड.
190 माइनस 10, अरे ये कहां से आ गया भैया, 90 सही है, सही आंसर है। अभी सब है, रुक जाओ सर, रिटन एक्सप्लेनेशन नहीं है अभी, सब है, रुक जाओ बच्चे, अभी आगे तो बढ़ने दो मुझे, मैं समझा रहा हूँ। अभी क्या हुआ पता है, हम लोग छोटे थे जब क्रिकेट खेलते थे, तो ऐसी क्या होता था, शर्त लगती थी। अब उस जमाने में तो लगती थी, मुश्किल से मैक्सिमम होता था, हम पे सब बजट ही नहीं होता था। मैक्सिमम मैक्सिमम 5 रुपए की शर्त लगती थी। तो हमारी जो टीम के कैप्टन होते थे, दो टीम में दोनों कैप्टन होते थे, उन्होंने शर्त लगा ली 5-5 रुपए की मैच जीतने पर। तो गलती से एक बार क्या हुआ कि इन्होंने मुझे बोला कि तुम रख लो पैसे 10 रुपए। मैंने कहा ठीक है। तो सपोज दो कैप्टन थे, ए और बी। तो पहला मैच ए ने जीता। तो उन्होंने कहा भाई पैसे वापस करो, इसको दो 10 रुपए दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ए ने कहा नहीं, रुको रुको, एक मैच और करते हैं, एक मैच और करते हैं। अगला मैच बी जीत गया। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, एक मैच ए ने जीत लिया, एक मैच ए हार गया, एक मैच बी हार गया, दोनों बराबर हो गए, पैसे घूम जाओ घर पे जाओ। दोनों 5-5 रुपए हार गए अपने। नाउ कम टू द एसेंशियल्स, वो हम जो डिस्कस कर रहे थे। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट? प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ, परफॉर्मेंस मस्ट बी डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और नॉट हैपनिंग, डिपेंड है। एन इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन एंड नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनीवन। इवेंट अनसर्टेन होनी चाहिए, किसी के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। म्यूचुअल chances to of win or lose, both the parties have mutual chances to win or lose. No control over the event, किसे कंट्रोल नहीं होना चाहिए, and no other interest in the event. So that's why insurance contract are never wagering, because in the contract of insurance both parties have same interest. ना तो इंश्योरेंस कंपनी चाहती है, ना वो जो आज जिसने इंश्योरेंस लिया वो चाहता है कि वो मर जाए। ठीक है ना? Effect of wagering, these agreement are void but not illegal. But in case of Maharashtra and Gujarat, agreement have been declared void, illegal. तो गुजरात महाराष्ट्र में इलीगल है, बाकी सब जगह ये void है, illegal नहीं। Wagering or gamble same, but gamble is not defined in contract act. स्टेक मतलब इंटरेस्ट उसका। सर इंश्योरेंस क्लेम करते समय पैसे ना मिले तो, अगर सारा अगर सारा प्रूफ भी दिया हो तो मिलेंगे, आप क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं आप, कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। सर सेकंड और 6 पॉइंट में डाउट है, सेकंड पॉइंट में क्या डिपेंड डाउट है भाई, डिपेंडेंट करता है किसी घटना के होने या नहीं होने पर। 6 पॉइंट कोई अदर इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी हर आदमी एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए, दोनों पार्टियों के, सब सामने वाला हार जाए मैं जीत जाऊं, राइट? डिफरेंट इंटेंशन। Suit to recover money deposited under wagering agreement. Money deposit with person is called stakeholder, जिसका इंटरेस्ट है, सपोर्ट कर रहा है। उसका क्या इंटरेस्ट है, उसका कमीशन मिलेगा, स्टेक होल्डर। टू बी पेड टू द पार्टी विनिंग अपॉन ए wagering कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय द विनर। कह रहा है कि अगर डिपॉजिट कर दिए तो विनर उसे रिकवर नहीं कर सकता पैसा, सिर्फ अपना पैसा रिकवर कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड द लूजर कैन रिकवर हिज डिपॉजिट फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, बट वेयर द स्टेक होल्डर पेज द मनी टू द विनर, द लूजर कैन नॉट रिकवर फ्रॉम इट। ये डिस्कस कर चुका हूं मैं। इसमें दो पार्टी कौन है, ए और बी, स्टेक होल्डर कौन है, सी। स्टेक होल्डर जिसका इंटरेस्ट सपोर्ट कर रहा है, जिसका इंटरेस्ट था। जिसका इंटरेस्ट था। कोलेटरल ट्रांजेक्शन में डिस्कस कर चुका हूं आपसे। द वैलिडिटी ऑफ कोलेटरल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी चैलेंज, मतलब वो वैलिड है, इट कैन नॉट बी चैलेंज बिकॉज द मेन कॉन्ट्रैक्ट इज वेजर एंड वॉइड। एग्जाम्पल, इन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट द ब्रोकर इज एंटाइटल्ड टू कलेक्ट द ब्रोकरेज। These
These are the point. These are the transactions which are not considered wagering. ये wagering नहीं माने जाएंगे. Game of skill, crossword puzzle, picture puzzle, athletic competitions, subscription or contribution or an agreement to subscribe or contribute towards any plate or prize of sum of rupees 500 or above to the winner of the horse race are not wagering in nature. Share market transaction in which delivery of stocks is intended to be given, जिसमें डिलीवरी होनी है शेयर्स की, वो wagering नहीं माने जाएंगे. Contract of insurance I have discussed, this is not wagering. Agreement to do impossible act, it is always void. किसी जादू से खजाना ढूंढ के लाएंगे, these agreements are void, right? Insurance is which type of contract? Contingent contract. Now time for super over 4. सर चिट फंड क्या होता है? चिट फंड क्या होता है वो कहीं और डिस्कस करेंगे बेटा, आज टाइम बहुत कम रह गया, वैसे ऑलरेडी हम निकल गए आगे. मतलब जो करा उसको देखते हैं अपन, ठीक है. First question, all agreements are contract only if they are made for lawful consideration and with lawful object. It is given in section 1023, both A and B, none of these. A, B and C entered into an agreement to carry on some fraudulent business and to share the profit in equal share. This agreement is सेक्शन 56. क्या है? अभी तो डिस्कस किया सेक्शन 56 बेटा. Any agreement to do any impossible act is void. Third point, an agreement which prevents a person from marrying a particular person or a person of particular class is valid, void, voidable, allowed with court permission. An outgoing partner retiring can restrain from carrying on similar business only. Any business, both of these, none of these. A regulation as to the opening and closing of business in the market are not legal, valid, void, illegal. Sixth point, A agrees to enclose a space between two parallel lines and B agree to pay 5,000 A for this fact. This is an agreement to do. आंसर चेक करते हैं बच्चों. Given in section 10, ABC enter agreement to carry some fraudulent business is void. Agreement which prevents a person from marrying a particular person of particular class is void. An outgoing partner can restrain from carrying on similar business only. Regulation as to the opening and closing of the business in the market are valid.
and agrees to enclose a space between two parallel lines, and B agrees to pay 5,000 to A. This is the impossible act, right? So person who gives the first person who has given all the correct answer is Mr. Ravi Kumar. Neha. Hello. Kavyansh. Ujjwal. Kritika. Vindhya. Sarla Devi. Aisha. रोशनी. उज्जवल. कौन है भैया? आपके आंसर सही नहीं है. मैं सही आंसर बता दिए आपको, जिन जिन सही भेजे उन्हीं के नाम ले रहा हूँ बेटा मैं. Essentials of wagering contract. I would like to take it. Okay, just a moment, beta. Right? Clear, अर्जुन? यही क्वेरी थी कि आपकी, आपने हैंड रेज किया था बेटा. इधर साक्षी. राइट. Horse race. The gambling in horse race is void, but if you are giving the award to the horse race is valid. सर हाउ टू रिमेम्बर सेक्शन? प्रैक्टिस कीजिए, बताया था मैंने, प्रैक्टिस कीजिए बेटा, प्रैक्टिस. लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएंगे सेक्शन. सो नाउ एक मिनट, क्वेरी और है. अंश भाई साहब, स्टडी मॉडल में जो लिखा है वो पढ़ लो प्लीज, आप एक्स्ट्रा मत जाओ. Would the May edition book be relevant for January exam? अजीत जी आप हैं या मैम? आर यू देयर? यस सर. एक बच्चे की क्वेरी है, वुड द मे एडिशन बुक बी रेलेवेंट फॉर जनवरी एग्जाम? सर मे एडिशन, सर कौन स्टूडेंट का नाम क्या है? मानसी भट्ट. मानसी, विच मे एडिशन यू आर टॉकिंग अबाउट? मे एडिशन. सर मे एडिशन तो नहीं है, देयर इज ओनली अगस्त 2024, बट रीप्रिंट हुआ है. ठीक है. एडिशन तो आपका अगस्त 2024 ही है मानसी. ओके. नेहा, यू आर आस्किंग अबाउट चिट फंड. बेटा अभी जो अपन स्टडी मॉडल में पढ़ रहे हैं ना, उस पर फोकस करते हैं. इसको किसी और प्लेस पे मैं डिस्कस करूंगा, राइट? एंड वन क्वेरी फ्रॉम मिस Siali. Please unmute yourself, बेटा. यस सर, स्टडी मॉड्यूल का सर जो एग्जाम्पल 32 है सर, वो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो आप? एक मिनट वेट कीजिए बेटा, मुझे स्टडी ओपन करने दीजिए. पेज नंबर बताइए. 2.74. 1. उसमें एग्जाम्पल 32 ऊपर एक एकदम. मिनट. यस सर.
2.64 74. 74. Example 32. A's estate is sold for area of land revenue and ये बेटा वो तो एग्जाम्पल था, मैंने कल डिस्कस किया था लैंड रेस्ट्रिक्शंस, ठीक, कोवेनेंट्स विद लैंड, कोवेनेंट्स रनिंग विद लैंड, मैं डिस्कस किया था। मैं इसको एग्जांपल को मैंने अभी शायद डिस्कस दोबारा कर रहा हूं, मैं रीड कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। Okay, sir. Sorry, sir. नहीं कोई बात नहीं। एज एस्टेट इज सोल्ड फॉर एरियर्स ऑफ रेवेन्यू अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर बाय व्हिच द डिफॉल्टर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम परचेजिंग द एस्टेट। B, upon understanding with A, becomes the purchaser and agrees to convey the estate to A upon receiving from him the price which B has paid. The agreement is void as it renders the transaction in effect a purchase by defaulter and would so defeat the object of law. This was the example, but before discussing this example, you should read the provisions. See, when consideration or object are of such a nature that if permitted would defeat the provision of law, यानी कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो जो आपका एग्रीमेंट है वो किसी प्रोविजन को हिट कर रहा है, राइट, है ना, जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था एक्साइज एक्ट वाला। ठीक है, अब इसमें क्या एग्जांपल है, एज एस्टेट इज सोल्ड फॉर एरिया ऑफ रेवेन्यू अंडर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर बाय व्हिच डिफॉल्टर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम परचेजिंग द एस्टेट। मतलब कि एक जो डिफॉल्टर था उसके पास असेट वापस नहीं जानी चाहिए। अब जिसने जो बायर था उसने एग्रीमेंट कर लिया इसे कि भैया मैं आपको लैंड आपको दे दूंगा ये खरीद के, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ ये वॉइड हो गया क्योंकि वो जो ऑर्डर था उसको डिफीट कर रहा है, राइट बेटा, वो लॉ के अगेंस्ट जा रहा है इनडायरेक्टली। गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू। ओके बेटा, अरिता आस्क योर क्वेरी बेटा। सर सेम पेज पे एग्जांपल बेटा मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही थोड़ा। सर सेम पेज पे एग्जांपल नंबर 33 35 35 35 is connected 35 is connected with that लिखा है ना जो point number 4, that general term injury means criminal or wrongful harm. In the following example, the object or consideration is unlawful as it involves injury to the person or property of another. If any agreement is in such a nature that it will harm the property or any person, that will be void or unlawful. Right? Come to the example number 35. What it says: A promises to repay his debt by doing the manual labor daily for a special period and agrees to pay the interest at an exorbitant rate. Exorbitant मतलब बहुत high rate, very high rate. In case of default कि भैया आपको लोन दे रहे हैं हम, ठीक है, और अगर आपने चुकाया नहीं तो इस पर हम इंटरेस्ट बहुत हाई इंटरेस्ट लेंगे आपसे। Here is promised to repay by manual labor is consideration for loan and this consideration illegal as it imposes in substantial amount to slavery, मतलब गुलामी जैसा हो गया ये कि भाई अगर आपने 100 रुपए का लोन लिया और आपने चुकाया नहीं टाइम पर तो हम आपसे कितना चार्ज करेंगे, 100 पे 100 ही ब्याज चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो दिस इज वेरी एक्सॉर्बिटेंट रेट एंड दिस इज इन द नेचर ऑफ स्लेवरी कि भाई आप तो गुलाम हो गए। नॉर्मली होता तो देखो आजकल गाँव में कई जगह ऐसा सुना है मैंने, बट आई एम नॉट श्योर कि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग माफिया टाइप होते हैं वो लोग बड़ा बड़े रेट पर अपने जो लेबर मजदूर होते हैं उन्हें लोन देते हैं बड़े बड़े ब्याज पर। तो दिस इज दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड बट दीज आर एक्चुअल में एज पर द लॉ आर अनलॉफुल, राइट बेटा? यस अरे सर। क्लियर हुआ बेटा? सर मेरा एक और, यस सर क्लियर हो गया। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। बताइए। सर आपने बोला था कि मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ट्रीट किया हाँ हाँ, जाएगा और नॉर्मल केस में जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, में यूनिलैटरल मिस्टेक बेटा मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही, डिस्टर्बेंस कर रही है। होता है। अरिता आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है। आई थिंक सर वी कैन टेक हिज हर क्वेरी ऑन फ्राइडे। ओके मैम, ठीक है मैम, है ना सर? अक्षत बेटा नेक्स्ट क्लास में लेते हैं आपकी क्वेरी। ठीक है मैम, ठीक है मैम, यहाँ क्लोज करते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। आज थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लेकिन चैप्टर लंबा था, यूनिट लंबी थी, बट थैंक यू सर। अगेन आई एम सेइंग कि रिवीजन जरूरी है। प्लीज
complete this unit today itself. Don't wait for tomorrow, right? Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. Dear students, we will meet now on Friday, and on Sunday also, we will continue with the Unit 4. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Technical team. Technical team.